Hey guys, Assalamu alaikum. This is your girl Saif. Welcome and welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. I am doing good too, Alhamdulillah. And I wanted to film this video for a long time. कितने महीने हो रहे हैं मुझे पता भी नहीं. I'm finally going to review e.l.f. Halo Glow Liquid Filter. मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं करा है. सीरियसली मैंने कौन सा शेड मंगवाया है. आई हैव ऑर्डर्ड शेड 4 मीडियम. सीरियसली मुझे मंगवाना था लाइट मीडियम थर्ड शेड और मैंने मंगवाया है सेकंड डार्केस्ट शेड फ्रॉम द रेंज. वेल आई एम लाइक दिस, आई डोंट नो व्हाई, बट चलो इसको करते हैं अनरैप. सो बेसिकली ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे दिखता है. नो आउटर पैकेजिंग, came in this bubble wrap and this is how it is. Right, so product तो अच्छा दिख रहा है except that the shade is too dark for me. तो what it does, this is the e.l.f. Halo Glow Liquid Filter. बेसिकली इसमें स्क्वालीन है तो ये हाइड्रेट भी करता है, तो इनका फर्स्ट क्लेम ये है. एंड एक ग्लो बूस्टर है तो ग्लो प्रोवाइड करता है. एंड you can wear this alone or over your foundation and apply to desired points on your face or all over your face, that's on you. इसका प्राइस है 1750 एंड इसमें यूजुअली डिस्काउंट नहीं होता है. e.l.f. में ड्यूरिंग दिस नायका पिंक फ्राइडे सेल एंड हॉट पिंक सेल आपको कई बार बाय वन गेट वन पे प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, तो आप इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स लेके मतलब हाफ ऑफ पे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो. तो या ये मई 23 में बनाया गया है. अप्रैल 26 तक इसकी वैलिडिटी है, तो मेरे पास थोड़ा टाइम है. मैंने क्या सोच के मंगवाया है, तो यू जस्ट हैव टू ट्विस्ट रिमूव इट लाइक दिस एंड आपको ऐसे 2 फुट एप्लीकेटर मिल जाएगी. एंड दिस इज़ हाउ द शेड विल look like. So this is how the shade will look like. At first glance doesn't look much, and it is all the time called as the dupe for Charlotte Tilbury flawless filter. I haven't used that, but I tried it in Dubai and I absolutely freakingly loved it. But मैं पिक नहीं कर पाई because I fell sick. अगर आपने मेरे vlogs देखे होंगे तो आपको पता ही होगा. मैं सोची थी कि बाद में जाके मैं दुबई मॉल से पिक कर लूँगी, बट नहीं कर पाए. सैड स्टोरी अलर्ट. तो ये कुछ ऐसे लगता है. लेट मी जस्ट ब्लेंड इट विथ माई हैंड एंड सी कि कुछ दिख रहा है. So this is the difference. As you can clearly see that there is a very good shine on the back of my hand. The reason I never used to pick products like these, like strobe creams or anything which gives glow, is because I have a lot of textured skin and I always thought ki textured skin or prominent dikhegi because the glitter particles will just settle down and all of that. But you have to get out of your comfort zones and try for yourself. So I like the doe foot applicator. So there are 2 ways that you can apply this product. एक तो आप अपने high points पे लगा सकते हो and then blend it, or you can apply it all over your face. तो मैं अभी सिर्फ इस साइड पे लगा के आपको डिफरेंस बताऊंगी. I think this is quite enough of a product. Clearly you can see this side has no product और इस side पे product है, and it's given me an amazing shine. I kind of like the shine. As far as the highlighter particles, they aren't visible. Like I cannot see any chunky particles visible. I wanted to mention, अगर आपको डर है कि chunky particles दिखेंगी, तो अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट हाँ एक बहुत ब्यूटीफुल सा ग्लो प्रोवाइड कर दिया है. आई कैन क्लियरली सी द डिफरेंस. ये साइड देखो प्रोडक्ट नहीं है और इस साइड देखो कि प्रोडक्ट है एंड अच्छी सी शाइन आ गई है. तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट भी लेने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ी ही क्वांटिटी में काम चल जाएगा. बट ऑफ कोर्स मैं
इस वीडियो के लिए, ताकि इस स्लाइड्स में आपको दिखे, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी ले रही हूँ। तो दिस इज़ हाउ द फेस विल लुक लाइक। तो अभी मैं क्या करूँगी, इस साइड पे फाउंडेशन लगाऊंगी एंड शो करूँगी कि कैसे दिखता है इन कंपैरिजन टू दिस। ये इवन दो ये डार्कर है, राइट, आप देख सकते हो कि ये स्किन में ब्लेंड हो गया है, तो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है। आई लाइक टू लुक टैंड, सो दैट इज़ मी। एंड ऑफ कोर्स आप हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हो, स्पंज से कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर से, जो भी आपका मन हो, आप ब्रश से भी कर सकते हो। तो मैं इस साइड पे ना आई एम जस्ट गोइंग इन विद मामा अर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन इन द शेड 02 creme ग्लो। दिस इज द लाइटर फाउंडेशन शेड, एंड बिकॉज ये थोड़ा सा डार्क हो गया है ना, तो आई एम गोइंग इन विद लाइट foundation shade so that you guys can see the difference. 2023 में ही लॉन्च हुआ था एंड इट बिकेम सुपर सुपर वायरल प्रोडक्ट, इतना कि बहुत टाइम तक ये वाला प्रोडक्ट ना वाज आउट ऑफ स्टॉक इवन इन इंडिया, और कहीं पे भी इट वाज रियली आउट ऑफ स्टॉक। तो फाइनली अभी थोड़ा सा स्टॉक में आया है, एंड मैं इतना वेट करने के बाद, अपने शेड के लिए वेट करने के बाद, बिकॉज मीडियम और द फर्स्ट फेयर शेड एंड द डार्केस्ट शेड वेर मोस्टली अवेलेबल ऑल द टाइम, बट आई वॉज वेटिंग फॉर माई शेड एंड देन आई ऑर्डर द डार्कर शेड विच वॉज ऑलरेडी अवेलेबल। तो आई डोंट नो व्हाई आई वॉज वेटिंग, मैं पहले ही मंगा ले सकती थी अगर मुझे यही शेड ट्राई करना था, बट या I'm very absent-minded sometimes. So this is the difference. This is without the foundation and this is with the foundation. So clearly it's given me a very beautiful shine, and as far as I can see, it's not settled into my texture and all of that. You can go if you have a good clear skin. आप ये लगा के अब बाहर जा सकते हो. Can set it with a compact powder around your under eye and mouth area wherever you feel like, and then you can just head out without using any foundation also, because it gives a tiny bit of coverage. So in case you're looking at for a healthy sort of a glow kind of a thing, you can make do with this product all by itself. Not set anything yet, but I'm just showing you how it looks like. So definitely this is more even though this foundation has a bit of glowy effect in it, but the glow is not that much in comparison to this one. So this one has more glow added because of the halo glow, and this one is glowy but still not as glowy as compared to this. So that's the difference. ये side glowy है और ये side glowy नहीं है, तो this is the second way that you guys can use it on your high points of your face and wherever you apply highlighter, and then you can blend it. So आपको extra highlighter लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So I will finish my full face of makeup and then come back to you guys. You guys, मैंने complete makeup कर लिया है and you can see the glow really popping through. मैंने set करा है face and still the glow is there in spite of setting and doing setting spray, everything. पूरे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद भी एक ब्यूटिफुल ग्लो दिख रहा है, हेल्दी ग्लो दिख रहा है. माई मेकअप लुक्स so beautiful and flawless. I feel like this is a 10 on 10, but I might go for a shade lighter or the lighter shade and mix and match and use and see if that will make any difference, because I feel that a little bit it is not matching my neck, but overall I love the beautiful look that it's giving on my face. Any which ways mistake हो गई है, अब कुछ नहीं कर सकते. Super impressed by it. My makeup looks चमेश्वरी, like it looks so damn good. सोच रहे हो खरीदने की तो आप ये डेफिनेटली खरीद सकते हो. एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑब्वियसली थोड़ा सा फेस को ज़्यादा सेट कर लेंगे, तो फिर ये आराम से आपके ऑयल जोन को सेट कर देगा, तो आप ऑयली नहीं फील करोगे. एंड आई वोन दिस फॉर क्वाइट सम टाइम. मैंने 1-2 वीडियोस साथ में ही फिल्म कर ली थी, तो ये बहुत टाइम तक मेरे फेस पे है एंड आई कैन सी इट्स लुकिंग मैग्निफिसेंट. जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, इट्स लुकिंग मोर ब्लेंडेड एंड मोर सीमलेस एंड मोर ब्यूटिफुल ऑन माई फेस. सो इट्स 10 on 10 फॉर मी. आपको कुछ भी इसके बारे में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो मुझे बता देना. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू
टेल यू गाइस। बाय द वे इंग्रेडिएंट्स की बात कर लो, इसमें स्क्वालिन है, हाइलोरॉनिक एसिड है, एंड इसमें फाइनली मिल्क पाउडर्स हैं जो ब्लर करेंगी आपके लाइंस एंड पोर्स एंड गिव्स यू स्मूथर एंड सॉफ्ट फोकस लुक, विच इट्स गिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्ट फोकस लुक। एंड इन्होंने इसमें बताया है कि देर आर 8 यूनिवर्सल शेड्स, बट इंडिया में अभी सिर्फ 5 शेड्स अवेलेबल हैं। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग, एंड ये सिर्फ आपको नायका पे मिल जाएगा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इट्स अ वर्थ इन्वेस्टमेंट, एंड 10 on 10 फ्रॉम, why am I making so much noises, 10 on 10 from my side, you guys. Mwah.